Hi dear students, very good morning to all of you. Today we will disseminate the knowledge about the entitled theme, Nature of Learning. As we know that learning simply means modification of the behavior with the result of experience. Dear students, तब तक लर्निंग नहीं मानी जाती है जब तक कि लर्निंग को कनेक्ट एक्सपीरियंस के साथ नहीं किया जा सकता है। दैट इज वाई लर्निंग सिंपली डिफाइंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय मीन्स ऑफ वन वे एंड सेकंड वे वी रिसीव द वेरियस एक्सपीरियंसेस। डियर स्टूडेंट्स, the following points will describe the nature of learning. Number 1, learning is behavioral change. As we know that the nature of learning is changing. There is hardly any aspect or element which does not undergoes change. By and large, we can say that the human behavior also changes because the human behavior is in the state of flux. और जो ह्यूमन चाइल्ड है वो इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें लर्न करता है, सिंस फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, फ्रॉम cradle till grave. According to great behaviorist and whom you called father of behaviorism, he has beautifully remarked, give me a 1 dozen of healthy children, I will make it whatever you want. Child becomes doctor, child becomes engineer, child becomes thief, child becomes vagabond. Dear students, actually focus is here on environment. It is decided by the type of environment in order to shape the behavior of an individual. यानी कि एक इंडिविजुअल को दोनों चीज़ें लर्न करने के चांस होते हैं। वो अच्छी चीज़ें भी सीखता है और बुरी चीज़ें भी सीखता है। यानी कि आई मीन टू से यू इन्वायरमेंट विल promote the desirable behavioral change vis-a-vis the undesirable behavioral change. Dear students, there is the greater role which is performed by teachers, parents and other society members. When we will take the example of parents, mother is having close connectivity with the child, क्योंकि जो बच्चे की सोशलाइजेशन होती है उसमें मेजर रोल मदर का होता है. That is why Gandhi has beautifully remarked, give me a good mother, I will give to a good nation. It depends upon the mother. वो किस तरीके से बच्चे को बिहेवियर शेप करेगी. यानी कि मदर एज ए सोशलाइजिंग एजेंट वो बच्चे में गुड हैबिट्स भी डेवलप कर सकती है और वो बच्चे में बैड हैबिट्स भी डेवलप कर सकती है. Now number 2, learning is continuous. Dear students, the nature of learning is continuous. It is not discontinuous. It means we learn throughout the life. जैसे कि हमने already describe किया है previous statement में, learning starts from birth and ends at death. हर एक लाइफ के मोड पे हम कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखती है. When we take example of the child, अगर हम एक बच्चे की मिसाल लेंगे, बचपने में जो बच्चा है वो पहले सीखता है कि हाउ टू राइड मोटर साइकिल, और मोटर साइकिल को सीखने के बाद वो मोटर बाइसाइकिल पे पहुंचता है. मोटर बाइसाइकिल को सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी लर्निंग कम्प्लेक्स होती है, फिर वो मोटर कार सीखता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो नर्सरी बर्ड्स होते हैं वो पहले एडिशन सीखते हैं. एडिशन सीखने के बाद
सब्ट्रैक्शन फिर सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रूल्स समझते और सीखते हैं, लाइक डिवाइड। और डिवाइड के बाद सिंपल मैथमेटिकल रूल्स, फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस वो सीखते हैं। और एट द एंड दे रीचड टू द हायर ऑर्डर ऑफ द लर्निंग, जहाँ पर उन्हें यानी कि कंपाउंड मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, अलजेब्रा सीखनी पड़ती है, जियोमेट्री सीखनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ती है, या और डिस्कोर्सेस है, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कोर्स है या सोशल साइंस डिस्कोर्स है। हर एक डिस्कोर्स में एक लर्नर जो है उसकी लर्निंग सिंपल फिनोमिना से स्टार्ट होती है और वो एंड कॉम्प्लेक्स फिनोमिना पे हो जाती है। आई मीन टू से यू, लर्नर जो है वो लोअर ऑर्डर से अपनी लर्निंग स्टार्ट करता है और वही लर्निंग हायर ऑर्डर पे ख़त्म होती है। इन नटशेल वी कैन से दैट लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस रादर देन द discontinuous process. Throughout their life, we learn different things when the individual or we come in contact with the environment. चाहे ये social environment है या natural environment है। Number 3, learning is purposeful. Dear students, learning is goal directed. I mean to say you purposeful. Dear students, जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, सीखने के पीछे एक वजह ज़रूर होती है। I mean to say you learning is goal oriented. It is purposeful rather than absurd or futile exercise. For example, we learn the language. हम क्यों लैंग्वेज सीखते हैं? In order to communicate our ideas, in order to transmit the information from one person to the another person. Dear students, as हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन पे वर्ल्ड एग्जिस्ट है। Dear students, अगर हम कम्युनिकेशन को बाहर निकालेंगे तो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, सोसाइटीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। Dear students, we learn the knowledge about medicine, यानी कि डॉक्टर्स को ज़रूरी होता है मेडिसिन की नॉलेज। What is the purpose to get the knowledge about the medicine? In order to treat the diseases, in order to treat the patients. Dear students, we learn different skills. What is the purpose to learn the different skills? In order to fulfill the needs and requirements of individuals, in order to fulfill the needs and requirements of society. That is why individual has to learn the various skills. चाहे वो कारपेंट्री का स्किल है, चाहे वो वुड वर्क है, चाहे वो मेटल वर्क है, चाहे वो कोई और स्किल है। Apart from it, dear students, we will quote other examples. For example, inventions and discoveries. हर एक इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है वो पर्पसफुल है, उसके पीछे कोई न कोई वजह है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ, आई मीन टू से यू इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is invented by one of the eminent scientists, namely जेम्स वाट. जब हर कोई इंडिविजुअल अपनी लेवल से देखता है और इस इलेक्ट्रिसिटी की यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी शय है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है. इट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस को डिस्क्राइब करेंगे शायद ही हम इस पे बात कर सकते हैं. या अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी देयर इज द इन्वेंशन इन द फॉर्म ऑफ बल्ब. It is invented by great scientist, namely थॉमस एल्वा एडिसन. और हम सब जानते हैं कि बल्ब की इंपॉर्टेंस क्या है. कोई भी इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है वो एमलेस नहीं है, पर्पसलेस नहीं है. दैट इज वाई लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस. द ग्रेट साइंटिस्ट, नेमली Alexander Fleming. Alexander Fleming has invented the drug
That drug is known as penicillin. पेंसिलिन से हम स्पेसिफिक डिजीजेस ट्रीट करते हैं. In nutshell, we can say that hardly there is any invention or discovery which has not having the purpose. Number fourth, learning is both individual and social. Dear students, as we know that learning is both individual phenomena and social phenomena. हम लर्न इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं और हम लर्न सोशल लेवल पे भी करते हैं. इन इंडिविजुअल लेवल बेस्ट एग्जांपल इज मदर. व्हेन द चाइल्ड कम्स कंटैक्ट विद द मदर, तो बच्चा जो है वो बचपने में, यानी कि जब बच्चे की सोशलाइजेशन होती है, चाइल्ड लर्नस नंबर ऑफ थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स फ्रॉम द मदर. टीचर भी एक अहम रोल अदा करता है टू प्रोवाइड द नॉलेज टू द लर्नर. या हम एक इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे. इंस्ट्रक्टर से हम गाइडेंस और हेल्प लेते हैं सो दैट वी विल लर्न द थिंग्स और सॉल्व आवर प्रॉब्लम. एंड लर्निंग इज आल्सो सोशल, मीन्स वी लर्न बाय मीन्स ऑफ इमिटेशन. व्हेन वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड ऑटोमेटिकली लर्निंग टेक्स प्लेस. जैसे कि हम सब जानते हैं, अल्फ्रेड बंडूरा हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग. इन मॉडलिंग द अल्फ्रेड बंडूरा डिस्क्राइब्स लर्निंग इज बेस्ड ऑन इमिटेशन प्रोसेस. वी ऑब्जर्व द बिहेवियर, हम दूसरे के बिहेवियर को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑटोमेटिकली इमिटेशन से हम फिर सीखते हैं. नाउ स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी, by and large, parents and teachers, they can play important role in order to help the learner to learn so many things. Number fifth, learning is based on intelligence. Dear students, as we know that hardly there is any task where there is not involvement of cognition. I mean to say you intelligence. Intelligence is basically cognitive ability or mental energy. On the basis of that, the individual is able to perform any type of task or activity. यानी कि dear students, कोई भी task हम perform नहीं कर सकते हैं without the cognition. Hardly there is any task where there is no involvement of intelligence. I mean to say you कॉग्निशन. कॉग्निशन जो है वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है. यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ऑल द टास्क्स आर बेस्ड ऑन मेंटल एनर्जी और उसी मेंटल एनर्जी को हम कहते हैं इंटेलिजेंस. अगर हम मोटर कार ड्राइव करेंगे तो उसमें हमारी कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट होती है. जब एक ब्रेड मेकर ब्रेड बनाता है उसमें भी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है. या इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, वहाँ पर भी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है. व्हेन वी लिसन द म्यूजिक, वहाँ पर भी कॉग्निशन इस्तेमाल होता है. हर कोई भी जो काम हम करते हैं कॉग्निशन ज़रूरी है. यानी कि वी कैन नॉट डिफाइन द टास्क्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉग्निशन. ग्रेट educationist or intellectual who has given the concept of taxonomy. His name is Benjamin Bloom. Benjamin Bloom ने 3 domains की बात की है. Dear students, domain is nothing. It means source of the behavior. यानी कि जहाँ से human behavior emerge होता है. And Benjamin Bloom has classified the instructional objectives into 3 categories. Number 1, cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. It means जब भी हम कोई टास्क करते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में ये तीनों डोमेन्स यूज होते हैं, चाहे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. Without the proper coordination and connection, the task cannot be performed. Learning is not possible. For example, according to
बेंजामिन ब्लूम। जब हमें कोई काम करना है, चाहे हमें गाड़ी चलानी है, चाहे हमें पढ़ाई करनी है, चाहे हमें एग्रीकल्चरल टास्क करनी है, चाहे हमें कोई ट्रेडिशनल काम करना है या ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, in every activity first involves the cognitive domain. As we know that cognitive domain is related to mind. Dear students, mind का क्या काम है? To think, to reason, to memorize, to understand and to know. जब टास्क में पहले माइंड इस्तेमाल होता है और इसके बाद जब माइंड अपना काम कंप्लीट करता है, हम ये नहीं कह सकते कि टास्क कंप्लीट हो गई है। दिस माइंड मेक्स द कोऑर्डिनेशन विद अनदर डोमेन विच इज नोन एज अफेक्टिव डोमेन। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू द फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि हार्ट। अफेक्टिव डोमेन जो है ये हार्ट के साथ जुड़ा है। एंड एज पर बेंजामिन ब्लूम, heart denotes feelings and emotions. As we know that there are positive emotions and negative emotions. In positive emotions, love, joy, sympathy, interest, empathy, etc. And in negative emotions, stress, jealousy, hate, anger, aggression, there are other several negative emotions. जब अफेक्टिव डोमेन अपना काम कंप्लीट करता है तो लास्ट डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है। अफेक्टिव डोमेन मेक्स द कोऑर्डिनेशन विद द डोमेन विच इज नोन एज साइकोमोटर डोमेन। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू द बॉडी, यानी कि मोटर ऑर्गन्स। और मोटर ऑर्गन्स का क्या काम है? एक्शन करना। फिर हम प्रैक्टिकली उस काम को अंजाम देते हैं, चाहे हमें पढ़ना होगा, चाहे हमें गाड़ी चलानी होगी, चाहे हमें एग्रीकल्चरल वर्क करना होगा, चाहे हमें खेलना होगा। एट द एंड वी कैन से दैट द नेचर ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव आस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द माइंड, affective aspect which is related to the heart, and psychomotor aspect which is related to the bodily organs. Dear students, this was all about today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you.